Hello and welcome to No Spin. I'm Nidhi Razdan. Well, what a day it has been in Parliament. The monsoon session has been completely stonewalled since it began last week, with the opposition demanding a discussion on the price rise. The government says it's ready for that discussion, but it wants Finance Minister Nirmala Sitharaman to reply, and she's still recovering from COVID. But there is a complete logjam, and today, as opposition MPs protested in the well of the House and brought in placards which the Speaker had said that they would not be allowed to display, the Speaker has gone ahead and suspended 4 Congress MPs today for the rest of the monsoon session. This is now triggered off a deepening crisis as far as Parliament is concerned, with no business actually being done for all these days and very little, if any, business likely to now take place for the rest of the Parliament session. Joining us now, one of the Congress MPs who was suspended today, Jothimani, joining us on NDTV. Also, Mr. Sudhir Mungatiwar, senior BJP leader, former Maharashtra minister, also joining us on the program. Jothimani ji, I'd like to ask you first, your first reactions to your suspension from the House. See, what are our 2 demands? A, we want this government to withdraw the GST on milk, rice, curd, hospital ICUs, and even pencil. So all the essential commodities are taxed. Common man cannot afford to bear this exorbitant tax. See, I am coming from a very small village representing a largely rural constituency. I went to Mahatma Gandhi Mannerega site. See, people are crying there, especially women who cannot afford to buy milk, who cannot afford to buy gas cylinder. Even they used to use after a small TVS 50. Even they cannot afford to fuel that vehicle. So, life in the villages, life in the agriculture family, life of laborers is miserable under Mr. Modi rule. We are asking the government, please withdraw this GST. Government, people can't afford to pay this GST anymore. Second demand is, please discuss the price rise in the floor of the Parliament. Parliament is for a discussion. If government is not ready to discuss the issue in the Parliament, then what is the purpose of the Parliament? Government says, let the Finance Minister, Ms. Nirmala Sitharaman, will come. We also want Nirmala Sitharaman ji should come back to the House soon, hale and healthy. But see the past record of this government. But Jothimani, if I could just briefly interrupt and ask you that, for, the Speaker's point was about bringing placards into the House, which he said would not be acceptable. It goes against the decorum of the House. Still, all of you brought placards into the House. Was that necessary? Nidhi, I just want you to go back 8 years before, when Congress government was in place, when the opposition BJP never raised any voice in the Parliament, never raised placard in the Parliament. We actually today protested with all dignity and decorum, unlike the BJP in the past. So government says you cannot use the word corrupt, you cannot use the word jumla jivi, you cannot use the word shame. So the rules actually, these are rules. How can you speak in the Parliament without using the word corruption? If government is so clean, so honest, why are they worried about the word corruptions? So this is how the government behaves. So what is the necessity to protest? For the protest first, if the government is ready to have the discussion on price rise, the government is ready to withdraw the GST tax levied on the essential commodities, there is no need for the protest. Second, I back to my point, when agriculture bill issue was happened, that time not the agriculture minister was answering the House, it was Mr. Rajnath Singh ji who answered the House. When Nirmala Sitharaman ji was a defense minister, when the Rafael corruption issue, Rafael scam was happened, it was not Mr. Nirmala Sitharaman answered the House, it was Mr. late Arun Jaitley was answering the House. So this government is simply bringing let me take this to Mr. Sudhir. Let me just take this to Sudhir ji. I'll just come back to you. I'll come back to you. Sudhir ji, is that not a valid point, that it doesn't have to be the finance minister who must reply to the debate, and that has been, as Jothimani ji rightly pointed out, other ministers have stepped in. The Prime Minister can step in also on an important debate.
So why not go ahead with the debate and let another minister reply? I'm sure Piyush Goyal could do it. ऐसा है कि जनतंत्र में चर्चाएं होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, संसदीय मुद्दों के आधार पे चलनी चाहिए, मुद्दों के आधार पे नहीं। सारा देश जब ये देखता है कि हम जो विषय पे चर्चा करना चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, पहली बात वो सांसद है। मैं अभी सुन रहा था मैडम को, मैडम सांसद है। यही संसद में हमने कानून पारित किया जीएसटी का। तो पहली बात तो हमें यह पता होनी चाहिए कि जब वो कह रही थी कि दही पे जीएसटी लगा है, दूध पे जीएसटी लगा है, पेंसिल पे जीएसटी लगा है, तो पहला प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ये निर्णय अब संसद नहीं करती, ये निर्णय कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करता। हमने जो संसद में कानून पारित किया है, अब सारे अधिकार जीएसटी काउंसिल को दिए हैं और जीएसटी काउंसिल कौन से कमोडिटी पे कितना टैक्स होगा, कौन से स्लैब में होगा, इसका निर्णय करती है। और जीएसटी काउंसिल किसी पार्टी के आधार पे नहीं चलती। जीएसटी काउंसिल में 2/3 मेजॉरिटी ये स्टेट की होती है, 1/3 मेजॉरिटी वोटों का अधिकार ये केंद्र को होता है। मगर जीएसटी काउंसिल इतनी सुंदरता से बनाई गई है और इसी वजह से आपको भी पता है जीएसटी काउंसिल का कानून यह राज्यसभा ने एक मत से उसको पारित किया था, उसके विरोध में कोई मत नहीं था, 0 अगेंस्ट वोट। अब जीएसटी काउंसिल में तो कांग्रेस के भी कुछ मुख्यमंत्री है, बाकी भी अपोजिशन के मुख्यमंत्री है, और जीएसटी काउंसिल की मेजॉरिटी ये राज्य केंद्र ये 2/3 1/3 के बाद 3/4 से होती है। दूसरी बात जो बार बार दुहाई दी जा रही है कि यह अमृत महोत्सवी वर्ष है, और यह बात सही है कि गरीबों को जीने का अधिकार है। आज भी देश में यह विषय हमारे सबके लिए चिंतन का, मंथन का विषय है कि गरीबों को जीने का अधिकार 75 वर्ष में देने में हम कारगर साबित नहीं हो पाए। लेकिन सुधीर जी, मेरा सवाल यह है कि ठीक है जीएसटी काउंसिल में मीटिंग हुई है, लेकिन जो पार्लियामेंट है दैट इज अ फोरम फॉर डिबेट एंड डिस्कशन, तो सरकार डिस्कशन क्यों नहीं कर रही है प्राइस राइज पे? किसी और मंत्री को जवाब देने दीजिए। सवाल सिर्फ यही है। ऐसा है, कांग्रेस के ही नेताओं ने पिछले समय एक विषय पे दूसरे मंत्री जवाब देने खड़े हो गए, तब कांग्रेस ने हल्ला बोल किया, क्यों नहीं आए मंत्री, और आज वो अपनी भूमिका बदल रहे हैं। ऐसा है कि कोई डेकोरम होता है, जब इनके मुद्दे खत्म हो गए तो मुद्दों के आधार पे आ रहे। अब आप बोर्ड लेके वहां पे लोकसभा अध्यक्ष के साथ बदसलूकी करने का काम कर रहे हैं। यही महाराष्ट्र विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक बिना बोर्ड के अध्यक्ष के यहां चढ़ गए, 12 विधायकों को 1 सेकंड में सस्पेंड कर दिया, और वो भी सस्पेंड 1 दिन के लिए नहीं, 1 वर्ष के लिए कर दिया कांग्रेस की सरकार। अब आश्चर्य की बात यह है, हाँ महंगाई पे डिस्कशन होनी चाहिए, महंगाई कभी भी हो, कोई भी सरकार। आप कह रहे हैं that they are changing the goal post. Jothimani ji, do you want to respond to that? Sudhir ji is saying that you objected in the past to different ministers replying to a debate. Yeah. I am saying, sir is saying that GST, talking about GST Council. See, who are all in the majority in the GST Council? It was BJP Chief Minister, BJP Finance Ministers, they are the majority in the GST Council. Obviously, BJP Finance Ministers are actually anti-people. They are accepting this government anti-people policies. But all the Congress Chief Ministers, DMK, Congress Finance Ministers, DMK Finance Minister, I'm sure all other opposition Finance Ministers vehemently oppose this GST on essential commodities. So that argument is not valid here. As you said, we believe Prime Minister should come to Parliament. He can answer why Prime Minister is applied up Parliament, why he is not coming to the Parliament, why he is not ready to face the opposition question and answer in the Parliament. Earlier, actually, Prime Minister said about the former Prime Minister, Mr. Monsoon Singh. He cannot speak, but Monsoon Singh ji came to Parliament and faced the questions and addressed those
questions of the opposition. What stops Mr. Prime Minister coming to the Parliament? That's what we are asking. So secondly, this is not, there is we are not actually going against any decorum or dignity of the House. We conducted our protest with all dignity and grace, with the decorum. It was the government who actually was going against the dignity of this people of this country. They are crushing the people while they are supporting the corporate. Their friends become actually fourth largest, richest in the world. While people are crushed by this Modi government, we are our duty, Congress party duty is to defend the people, fight for the people, fight against the anti-people policies of this Modi government. We are doing our duty. Let me ask Sudhir Mungetiwar. We will commit that crime again and again. Okay, let me ask Sudhir ji this, that Sudhir ji, suspending MPs is an extreme step. You have been a legislator yourself. Is it good for a democracy to suspend MPs from the House? It's a bigger question. देखो जनतंत्र मतलब एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप है और ये पहली बार नहीं हुआ है। नहीं, जनतंत्र में जब कोई जनतंत्र पे हावी होने की कोशिश करता है, जब हमारे देश के संसद की कुछ परंपरा है, जैसे हमारी बहन जी कुछ बातें कह रही थी जिसका जवाब अगर आपने मुझे समय दिया तो निश्चित रूप से देश के 138 करोड़ जनता के सामने हमने पहुंचाना चाहिए। पहली बात, जीएसटी काउंसिल में इनको शायद पता नहीं, मेजॉरिटी बीजेपी की नहीं है। मेजॉरिटी वहां पे बीजेपी कांग्रेस से नहीं पकड़ी जाती, राज्य और केंद्र को 3/4 वोटिंग से वो पारित करना होता। 1/3 संसद को अधिकार है, 2/3 राज्यों को है और जीएसटी काउंसिल में एक मत से डिसीजन होता है। दूसरी जानकारी मैं हमारे बहन जी को देना चाहूंगा कि मैं भी जीएसटी काउंसिल के 35 मीटिंग मैंने भी अटेंड की है एज ए महाराष्ट्र फाइनेंस मिनिस्टर। महाराष्ट्र की इकोनॉमी विश्व में 193 नेशन में 36, ये हमारी इकोनॉमी है। आप भी जानते हो हमारा 15% देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में 20% हमारा कंट्रीब्यूशन है और फाइनेंशियली हमारा बजट देश में केंद्र के बाद सबसे बड़ा माना जाता है। तो आपको ये जानकारी मैं देना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के ही मंत्री बार बार कह रहे थे कि 2017 के पहले जिन वस्तुओं पे कांग्रेस शासित राज्यों पे वैट था उस पे जीएसटी लगना चाहिए। हम विरोध कर रहे थे, लेकिन सुधीर जी अनाज पे नहीं करना ये तो दिस इज द सेम डिबेट दैट कुड हैपन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इज इट गुड टू बी सस्पेंडिंग? सस्पेंशन एक एक्सट्रीम स्टेप होना चाहिए। वो इज इट गुड फॉर आवर डेमोक्रेसी? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये हमारे लोकसभा का एक कैसे लोकसभा चलनी चाहिए उसका एक किताब होता है। लेकिन जब आप लोग ऑपोजिशन में थे, आप तो रोज आप लोग भी तो हंगामा करते थे। तो आप समझ आपको याद नहीं अरुण जेटली ने क्या कहा? मुझे हर बात याद है। डिसरप्टिंग द हाउस इज आल्सो वे ऑफ, हर बात याद है। प्रोटेस्टिंग ऐसा है कि जिसे हम एडजर्न मोशन कहते हैं, उसको स्थगन प्रस्ताव जो कहा जाता है, उसके विषय कौन से होते हैं, ये इसके पहले भी कई अध्यक्षों ने निर्णय करते हुए स्थगन प्रस्ताव के विषय क्या होने चाहिए। देखो, स्थगन प्रस्ताव के बारे में ये बड़ी स्पष्टता है। इसके पहले भी जब कभी आप कह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कभी स्थगन प्रस्ताव एडजर्न मोशन दिया होगा, वो समय में भी अध्यक्षों ने कहा कि आपने दूसरे आयुधों का उपयोग करके इस पे चर्चा करनी चाहिए। आप अगर लोकसभा का सुधीर जी, आपके एमपीज ने कई विषयों पर एक पूरा विंटर सेशन 2G स्कैम पर को लेके चला गया था, उस पे एक दिन भी चर्चा नहीं हुई। यू नो दैट ऑपोजिशन पार्टीज यूज दिस, इट इज अ लेजिटिमेट राइट टू प्रोटेस्ट। बट ज्योतिमणि जी, जस्ट अ लास्ट क्वेश्चन, you know, people also don't like seeing parliament being disrupted. Taxpayer money is being wasted every day. According to the government, some 4 lakh rupees are spent every minute on running parliament. People want to see a debate and a discussion. If you have waited this long to discuss price rise, why not wait for Nirmala Sitharaman to get better and come back? She should hopefully be back next week. Then the government says it's ready for the price rise debate. Then wait till then. Nidhi, I already answered that question, because it's not necessary in this government practice, not necessary the concerned minister has to answer the concerned department. This government in the past haven't followed that practice. Nidhi, you asked about that 4 lakhs rupees. This is the placard actually we have been shown in the parliament. When the Congress government was in the power,
The price of the LPG cylinder is 410 rupees. Now 1053 rupees. Don't you think the every penny, the common man with all their blood and sweat spending on this gas cylinder and spending on this GST is not worth of money? So that's what we are fighting. The poor man, a common man, a labor, a agriculturist, an agriculture labor, or a single woman, or a widow. So anybody, for them, their money do not have any value. What government is talking about? We are fighting for this money. People are spending with their blood and sweat. We are talking about this money. People are unable to pay. This money, this government levied on these people. This government looting from the people. This money do not have any value. That is what we are, legitimate question we are asking in the floor of the parliament. We are asking the same question outside the parliament also. This money, this every penny, every paisa is coming from the pain of the people, hard labor of the people. A poor mother want to buy milk, she has to pay more 5% GST. That is the money we should be talking about. The rest of the issues not relevant. We are the Congress party fighting for the people. We are raising a legitimate issue of the people. So your point is that it's an urgent issue. It requires urgent attention. It doesn't necessarily need the finance minister to step in. Clearly, this is a logjam that is going to continue possibly for the rest of the session. Thank you to both of you for joining us today. Thank you.